और रस तो है ही है. All rasas, they nourish Madhurya rasa. But you say, how Shantarasa will nourish Madhurya rasa? Because in Shantarasa, there's no Sevavriti. नहीं रहता है. In Shantarasa, there is no सेवावृत्ति नहीं रहता. mamata and also no tendency तो to वो serve. कैसे माधुर्य रस को कैसे पुष्टि How करते हैं? Madhurya rasa is nourishing? माधुर्य रस श्रृंगार रस में उसकी रोल क्या है? What is the role of श्रृंगार? What is the role of Shantarasa nourishing Madhurya rasa? शांत रस जो है, शांत रस में जहाँ पर सेवा भी नहीं है In Shantarasa, there is no seva even. और ममता भी नहीं है, Also no mamata, no possessiveness. तो वो शांत रस माधुर्य रस की कैसे पुष्टि करेगा? So how does Shantarasa nourish Madhurya rasa? You राधा जी might जो think मान कर no, but actually yes. When उस Shmatradka मान is बताने man, ही शांत रस सेवा पुष्टि करते रहते, सेवा करते रहते. in this way Shantarasa is serving also Madhurya rasa. जो रसिक वैष्णव जो है वो Those who are Rasika Vaishnavas, they don't understand. Those who are not Rasika, they cannot के understand. मान Shmatradka, when she is feeling man, मान से राधा जी कृष्ण से दूर बैठी हुई है. Shmatradka is sitting far from Krishna. कृष्ण वहां पर पहुंच नहीं पाते. Krishna cannot come तथापि near वो her. रस की पुष्टिकार Still, this is nourishing the Madhurya rasa, the rasa. इसलिए इस समस्त तत्व विचार हमारे गोस्वामी बाबा ने दिया है. So our Goswamis explain all these tattva vichara, all these conceptions. शांत रस माधुर्य रस के भी, माने श्रृंगार रस के भी, How even Shantarasa nourishes Madhurya rasa. इसलिए कहते हैं ये नमो अनंत लीला है. अनंत लीला करने से So when you say Ananta Lila, when it said Ananta Lila is actually ली अल्लाह describing about the Rasa Lila, जहाँ Lila. पर कृष्ण के ऐसे मधुर मधुर लीला आदि आकर के Beautiful pastimes of चित्त के जो Lord है, अर्थात साधक के चित्त के क्या करते हैं? that आनंदित करते हैं. completely आनंद gives so much समुद्र bliss to मंथना, the ocean of the, आनंद to समुद्र में the heart of the sadhakas, निमज्जित कर दे, डुबा and देते हैं. makes the sadhaka drown in ocean of ये जो bliss. वर्णन किया है. इसे अनंत शब्द के अर्थ है क्या? So Ananta रास means, लीला के ही सूचित करना. Ananta indicates the Rasa Lila. इसलिए रास लीला की कहा जाता है एक चक्रवर्ती. So the Rasa Lila is the emperor of all the pastimes. सार्वभौमत्व लीला कहा जाता है. सार्वभौमत्व जैसे कोई व्यक्ति, जो कोई राजा अनेकों देशों के Like a king, for राजाओं example, को विजय प्राप्त करके a उनके king, ऊपर after conquering many other countries and other Yeah. kings, that king becomes चक्रवर्ती सम्राट. like the great emperor. It is he's उसी known प्रकार as a great emperor. समस्त लीलाओं की So in the same way, मुकुटमणि, चूड़ामणि, ये रास लीला. the Rasa Lila is the best of all the pastimes. And when it said an Ananta in this slokas is describing the Rasa Lila, indicating the Rasa Lila. Actually, Ananta, there is no end to it. So there are so many Lilas included in the Rasa Lila. Who can describe? Rasa Lila is not only आलिंगन चुम्बन आदि, embracing a kiss, नृत्य, गीत, बात, only. No. Dancing, singing. अनेक प्रकार की कला आदि यहाँ पर Many kinds of प्रदर्शित होता है. different arts together. Like a presentation of different arts in the Rasa Lila. And many different moods also जिस प्रकार involved. So I told, just like नदी समूह एक नहीं है, हजारों नदियां समस्त देशों की like all the rivers, प्रवाहित करते हुए. imagine many rivers, they're flowing in different fields and different countries, in different lands. They're fertilizing all these fields, all these lands. But in the end, these rivers, they mix, like और उस नदी के उस they end in the ocean. क्या करते हैं? And they actually they increase the volume of the water of the ocean. They इसमें सबसे श्रेष्ठ नदी कौन है? दीर्घतम नदी make the water of the ocean grow. You know what is the largest river in the world? नील नदी को माना जाता The Nile River. है. Largest, longest, I think, you know, longest, like from the longest और river. इससे Or जो largest, है, I don't know how to say in अमाजन English. नदी भी नाम सुना है. But the Amazon River is also अमाजन very नदी कई देशों के स्पर्श करते हुए long. Amazon River touches many different countries and later it mixes in the ocean. शास्त्र में कहा गया. Shastra explains. अमाजन नदी क्या है? The Amazon River चौड़ा में सबसे अधिक माना जाता है. is the greatest in width, like wide width. And also, but also it goes from many countries, not only in Brazil.
Brazil especially, but पेरू आदि लेकर के Peru and many other countries are also नील नदी with the Amazon River also goes in these other countries. And the Nile River is also very long. जो है जिस प्रकार So what I want to say is just like in the rivers, these rivers they flow in different countries, in many countries, और and समुद्र में जैसे मिलित होकर they mix in the ocean, like they come to the ocean at the end, and they also increase the ocean, like the volume of the ocean and everything. So in the same way, there are how many kinds of rasas? 12 rasas. 5 primary, 5 main, mukha, and 7 secondary rasas. Understand? ये 12 प्रकार की जो है रस माना जाता है So 12 kinds of rasas. और रस इस समस्त रस समुद्र के क्या करते हैं स्फीत कराते हैं And they are also increasing this rasa samudra, this ocean of rasa. Krishna is the ocean of rasa. इसलिए तो उद्धव ये शब्द बोलते जा रहे So Uddhava told this shloka. गोपी को बद्धो गोविंद एक निकलात्म गुरु भावा वांछन्ति जो मुनय वंच कि ब्रह्म जन्मवीर अनंत कथा रसस भगवान श्री अनंत कथा में जिसकी रुचि नहीं Those who don't have taste for the Ananta Katha, even if they are born as Brahma, they are disgraced. Fire on me, fire on me. और दिक्तां ब्रह्म जन्म Even the birth of Brahma, पद को प्राप्ति करना if someone who has the post of Brahma is useless if he has no taste for Ananta Katha, Rasalila Katha. The best birth amongst human beings is the birth as Brahma. यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ये भगवान के नाम में रुचि नहीं हुआ, ये भाव को प्राप्त नहीं किया, तो व्यर्थ का I think Gurudev also said Brahmana birth. If you're birth in the Brahmana family, not only Brahma but Brahmana. One second, let me see. व्यर्थ है कि So this supposed to come back. नाम के द्वारा क्या होता है? अनुभव होता है. जितने नाम करोगे, so the more you chant holy names, the more realization you'll get. Okay, doesn't say. परायंती जो मुनय वंच कि ब्रह्म जन्मवीर अनंत कथा रसस भगवान श्री अनंत कथा में जिसकी रुचि नहीं है, उनके ब्राह्मण जन्म अधिक है. दिक्तांग फाइन द बर्थ ऑफ ब्राह्मणा, birth of Brahmana. दिक्तांग ब्रह्म जन्म ने ब्रह्म पद को प्राप्ति करना. So two meanings as if you have the post of Brahman and have no taste for Rasalila is useless, and also the birth of a Brahmana is the highest among the human beings. Brahmana. So if you were born in a Brahmana dynasty, Brahmana family, but if you don't have taste for holy names, you didn't attain this bhav, so it's useless actually. Useless or not? Yes. So by chanting holy names, we'll be able to attain realization. The more you chant holy names, by the holy names, you'll be able to attain realization. By Gyan, knowledge, you can sometimes think about that thing, about something. Like by Gyan also you can, learn, you can think about that subject, but also Gyan and knowledge brings ego. Sometimes Gyan, knowledge makes us egoist, like ego proud. Oh, I'm such knowledgeable. I know everything, everyone else feel foolish. And then you commit offense to the lotus feet of a Mahabhagavata. Like Haridas Thakur, Gorakshara Das Babaji Maharaj. They would not speak any shloka, Gorakshara Das Babaji Maharaj. But if he would come to an assembly of great panditas, he would correct them. He would show them their mistakes. So by only knowledge and intelligence, like this scholarship, they cannot understand. Really. Like the gopis, they went to each college. The gopis would speak in shloka. But Uddhava and many great Gyanis, they were also praying to get to their lotus feet.
वांछन्ति जदभो मुनयो वंच किंग ब्रह्म जन्मभिर अनंत कथा रसस्य। भगवत नाम और भगवत कथा में यदि रुचि नहीं है, if you don't have taste for Harinama and Harikatha, सारी then all of your चेष्टा endeavors are व्यर्थ, useless. Useless. Nothing. ईश्वर नाम परायण So those who are chanting holy वैष्णव names की कभी properly, निंदा करना नहीं चाहिए। sorry, you should never वचन criticize हरे somebody नाम करके तुम्हारे क्या फायदा है? who is chanting holy names. शास्त्र अध्ययन कर लो, ऐसे कहने व्यक्ति अपराधी माना जाता है। You should never chant someone who is absorbed in chanting, like somebody who is really chanting holy names properly, like a real person absorbed in holy names. You should never criticize this person, like saying, you should not chant, better you just study like this. It's an offense. नाम परायण व्यक्ति के ऊपर वो क्या करे? निंदा करे। It's an offense to criticize someone who is chanting holy names. तुलसीदास जी रामचंद्र मानस Tulsidas wrote, फल है एक है, परिश्रम के फल की एक ही क्या है? there's actually only one fruit of studying, प्रेम हो जाना, to give prema for God, ज्ञान से विज्ञान हो जाना, like to have realization about the things you're studying. ज्ञान भी करते जा रहे हैं, If you're only learning, कुछ लाभ नहीं। but you're not getting realization, there's no benefit. यानी अनुभूति होगा एकमात्र किसके द्वारा? And to get realization, there's only one way, by holy names. समझ लो, Do you understand? परिणाम के द्वारा ही By chanting holy names, you'll be able to attain realization. इतने समय तक पढ़ा है। आगे की कथा सुनो। Okay, so I'll continue ये reading. कहते हैं So, ये ब्रज में साक्षात सेवा प्राप्ति कैसे हो? how to attain directly service in Braj. वो साक्षात सेवा का अनुकरण है। This सिद्धि के समय पहले दुर्गत सेवा प्राप्ति होती है, क्रमशः मंजरी के अनुगत होकर दूरवर्ती सेवा करते करते सखियों के निकटवर्ती सेवा मिलती है। पहले सेवा, so first of all, दुर्गत सेवा प्राप्ति, you serve in a far away और धीरे धीरे service. वो मंजरी Then सखियों की slowly, अनुगत में सेवा under the guidance of the Manjaris and Sakhis, निकटवर्ती सेवा जन you will come to a closer seva to Srimati Radhika. पहले जाओ अनुगत करो। So first, under the guidance, गुंथने like के लिए for example, to make some garland, you'll have to ले आओ, pluck the flowers, or like make the sandalwood pulp. सखी एक है ना, There's a उनके अनुगत में Chandan क्या Bati करना पड़ेगा? Saki, this Saki, Chandan? Chandan Bati. So we have to, कितना पड़ेगा? under her guidance, तब you have वही सखी to चंदन make the बती sandalwood. सखी And then this Chandan Bati जो Saki, राधा जी one की friend, नित्य जो है चंदन अनुलेपन करती है, she's always राधा जी की एक applying सखी this के नाम है, क्या sandalwood बताया? in Srimati Radhika. चंदनवती। Her name is Chandan Bati. क्या नाम बताया? चंदनवती। What is her name? वो Chandan Bati. चंदनवती सखी के अनुगत करने So पर under her तुम्हें guidance, सेवा you'll प्रदान be करें। able to attain this जो सेवा seva. तुम्हारे प्राप्ति करना है उससे भी उसकी तो अनुगत करना पड़ेगा ना। If you get any service, you have to first start आप- under the guidance. कि मन में विचार है मैं So if you think, राधा जी के श्रीअंग में चंदन लगाओ, I want to apply sandalwood in the pulp, तो sandalwood राधा जी के paste in the body of श्रीअंग में Srimati चंदन Radhika, लगाने on के her लिए body. So apply sandalwood कौन सखी paste के अनुगत on करना her पड़ेगा? body. You have चंदनवती। to be under the guidance of क्या नाम Chandan Bati. बताया? What's her name? चंदनवती सखी है, Chandan Bati Saki. भावनामृत ग्रंथ में In the book Shri Krishna Bhavanamrita, her name is चंदनवती के there, सखी, is indicated. उस चंदन सखी का अनुगत करना पड़ेगा। So you have to be तो under her अनुगत करो, guidance. चंदनवती सखी कहेंगे, ठीक है, Then जाओ। okay, she will पहले say, चंदन okay, काट लेकर के आओ, first cut the sandalwood, लकड़ी, like cut the wood of sandalwood. जाओ जंगल में जाओ, She'll tell you, go in the jungle चंदन and cut the sandalwood लकड़ी को wood. लेकर के आओ। अब कष्ट है कि नहीं? So it's difficult or not, imagine, to cut. चंदन पेड़ के ऊपर विषधर सांप लपटा हुआ था, And maybe there's a big snake on the sandalwood और tree, वहीं से लेकर के आओ, poisonous snake, and you have to cut the वो sandalwood. डांस देगा, Maybe the snake will आप bite दादी से you. Then so very careful, you have to bring it. तो लाने के लिए क्या करना पड़ता है? सर्प वशीकरण मंत्र का So सीखना पड़ेगा। actually you have to learn the mantra to control the snakes to be able to go there, otherwise the snake will bite you. वशीकरण So you have to know the mantra to control the snakes so that you can, सर्प वशीकरण मंत्र सीखने के लिए so you have to learn the mantra ठाकुर ऋषि के पास जाना पड़ेगा। to Bhagavati Rishi. With Bhagavati Rishi, you have to go to Bhagavati Bhagavati Rishi Rishi to बताएंगे, learn this mantra, then he'll teach you कैसे
how सांप को जो है to control the वो snakes, चंदन पेड़ से उसको भगाना है। how to make the snake go away from the sandalwood tree, because the snake is on the sandalwood tree. So when you chant the mantra and you put the hand like this, the snake won't do anything to you. चंदन पेड़ को छोड़ करके And the snake slowly will come down from the sandalwood tree and go away. चंदन डाल जो है चंदन पेड़ को मत काटो, So don't पेड़ cut काटना मना है, the trees, it's forbidden. You should not cut the trees. पेड़ के काटा नहीं, जो But डाल सूख गया the branches which dry up, they fall down. धीरे Or which the branches that are कष्ट न हो, the branches that are already ऐसे सूख गया और उसके खींचो और सारा पेड़ हिल जाए वह उखड़ जाए, ऐसे नहीं। okay, sorry. So look, you should never cut the tree. Any branch should not cut. So but if that branch is dry already, then you can cut. But how to cut it out? Very slowly, like holding and slowly, so as the tree will not feel any pain. You should not like just cut and like pulling the tree and then all the tree is moving because you're cutting. The tree is moving so much because you're like giving so much trouble to the whole tree because you're cutting that dry branch very slowly and with care. अत्यंत स्नेह प्रीति के साथ With a lot of love and affection, you cut out that डाल को आप dry branch from the tree. Cut it out वो डाल दो, because it's already dry. लेकर के फेरना। Then you bring it over. अच्छा, मेरे कहने के चंदनवती सखी के अनुगत्य में आपको क्या करना पड़ेगा? पहले So under the guidance of Chandan Bhati Saki, you have to Durgata Seva, service from far. What is this? The service from far. संग्रह करना पड़ेगा। You have to collect the wood of the sandalwood for her. और फिर कहेगा फिर चंदन घिसो। Then you have to rub the sandalwood. उनके अनुगत्य में चंदन घिसो। Like you have to rub the sandalwood under her guidance. भी एक कला भी है। There's an art of how to rub the sandalwood to create the pulp. नहीं जानते हो, if you don't know this art, एक भी चंदन आपको नहीं है। You're just doing this and that, like you actually cannot get. You're rubbing for 30 minutes, but you cannot even get a little bit of pulp. How to rub the sandalwood wood? There's an art behind this. So under her guidance, you learn how to properly rub the sandalwood to make the pulp of the sandalwood wood. Then you put in a pot all this pulp mixed with aguru, is one like a perfume, and also put karpur, camphor. But where to get karpur, camphor? Then you have to go to the karpur manjari. भाई देखो इतने सहज थोड़ी है। My brother is not easy at all. It's not so easy. किसके पास जाना पड़ेगा? So you have to go to whom? कर्पूर मंजरी के पास। कर्पूर मंजरी. Karpur means camphor. So उसके अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। So under her guidance you have to learn. Then you have to bring the camphor. फिर चंदन से मिलाओ। Then mix with the sandalwood. अगुरु चंदन और फिर Aguru, chandan, chandan means sandalwood. Then you also have to put kumkum in this mixture. चतुस्समा जिसको कहा जाता है। This is called chatusama. It's like this pulp of these perfumes, aguru, sandalwood paste, चतुस्समा अगुरु, कुमकुम, aguru, perfume. Okay, aguru is a perfume, chandan, ये चारी सामग्री मिलने कुमकुम पर and camphor. सुंदर होता है। This is very nice mixture. समझ गए? Do you understand? फिर लेकर के राधा जी की श्रीअंग में Then you apply it. प्रलेप करना पड़ता है। So ये तो कब then it will be applied. It will be applied in the body on the body of Srimati Radhika. So the Chandanavati, her Nitya Seva is this one. So to serve चंदन राधा जी की श्रीअंग में लगा पड़ता। So if you serve under her guidance, you'll be able to, अनुगत्य बिना to help in the seva of applying Chandana to Srimati Radhika. अनुकरण है। So साधक के समय जो सेवा होती है वो साक्षात सेवा का अनुकरण है। सिद्धि के समय पहले दुर्गत सेवा प्राप्ति होती है। So in the time of Siddhi, first you're serving from far. Gurudev is reading from Anashiksha. क्रमशः मंजरी के अनुगत होकर दूरवर्ती सेवा करते करते under the guidance of this manjari from far, then you'll be able to serve closer to the Sakis. दुर्गत सेवा करना पड़ता है। So first Durgata Seva, very far. Like I told, if you need to चंदन लकड़ी संग्रह करो, serve like the sandalwood, first to collect the wood of the sandalwood, then you also help
rubbing the sandalwood, making the pulp. This is called दूरवर्ती सेवा, Durabati Seva, like Seva from निकटतम farm. सेवा चंदन लगाना आदि, Then service from close, होकर के like applying the pulp of sandalwood in Srimati Radhika. If that Saki is pleased with you, if the Saki is pleased with your service, then she will give you this opportunity to serve also from close and applying the pulp directly on the body of, I think, the divine couple. Huh? उसे इसके बाद श्री राधा गोविंद की साक्षात सेवा प्राप्ति होती है. So after that you get the direct service, होती है, जैसे कुंज मार्जन, like cleaning the kunja, सजाना, making the bed, जल लाना, giving water, माल्यहार गुथना, तांबुल की बीड़ी प्रस्तुत करना, making the tambula and betel nuts. दान इत्यादि अनंत सेवाएं. There are so many unlimited services. मंदिर मार्जनम, मंदिर को मार्जन करना, Cleaning झाड़ू देना, the झाड़ temple पोंछ करना. इसको क्या कहा जाता है? of cleaning. मंदिर मार्जनम कुंज सेवायाम. So to clean the temple is like cleaning the kunja. उनको क्या मिल रहा है? कुंज सेवा प्राप्ति हो रहा है. अभी समझ में नहीं आ रही क्या करते जा रहे हैं. ज्ञान में अज्ञान में मंदिर को सेवा कर रहे हैं. So a person is cleaning the temple, he doesn't even know, but actually this will bring to the kunja seva. बात कहते हैं मंदिर मार्जनम कुंज सेवायाम. Jiva Goswami explains to clean the temple is actually cleaning the kunja. ये कुंज सेवा की प्राप्ति. If you clean the temple, it's like you attain the service to the kunjas. देखो कितने सुंदर The cleaning of the kunjas. पर वर्णन. So beautiful this bhav described here. माला गुथना, माला To make garlands, सुंदर सुंदर पुष्पों के चयन करके you pluck beautiful flowers to create a garland, make a garland. बिंदु धमिल दाटी विगत मधुगुण के की पंच प्रशस्त मधुर बिंबो दिग्न तम रागम स्फुरत अमलम कपलम राधिकाम और चयन. हमारी रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक के So बताया. Rupa Goswami he told this विगत sloka. कुसुम बिंदु धमिल दाटी विगत मधुगुण के की विचित प्रशस्त है. ललिता देवी के आदेश प्राप्त होकर के So being ordered by Lalita Devi, Rupa Manjari, she has plucked beautiful flowers सुखी ने किया कि उसको माला गुंथन की. and then she made the beautiful माला को garland. राधा जी की केश दाम में सुंदर रूप में And she ornamented the hair of Shrimati Radhika with these beautiful garlands. देखो कैसे सुंदर. Look how और beautiful. राधा जी के केश दाम माने मस्त के ऐसे जो क्या बोलते हैं बीड़ा जूड़ा. Shrimati Radhika has a beautiful हैं? braid बीड़ा, जूड़ा, on क्या her बोलते hair, हैं? जूड़ा हैं आज like a bun, a bun on कैसे top बात of her hair, also ornamented. हैं? हम लोग जानते नहीं हैं. छोटे हम उस समय छोटे छोटे ऐसे ऐसे भी कीर्तन करते थे. So हैं? when क्या वो we were young, we also used to माने sing लोग this. जो कीर्तन हैं? People used to sing these kirtans बंगाल में also. कीर्तन होता In है. Bengali, there is a kirtan in Bengal. We used to मैं भूल sing गया, also. उस I समय forgot. करते थे ना कभी-कभी, हैं? But sometimes we used to sing when we were small. क्या हो गया? Not coming? Internet not working? The internet's not working, Gurudev is asking. हाँ? हाँ, बड़ा लोकेर बेटी लो लंबी लंबी चूल है. क्या बोले? बड़ा लोकेर बेटी लो लंबी लंबी चूल एमन भूल गया. Forgot. मैंने तुम तो बड़ी लड़की बड़े आदमी के जो है बेटी हो. You are the daughter of a great तो man. क्या करूं? So what should I do? बेटी लो लंबी लंबी है. क्या भूल गया? चलो. Yeah, I forgot the song. गुफा माने क्या बोलते? जुड़ा में जो है So in your, फूलों के द्वारा सजा दें. so I'll ornament your bun with beautiful flowers, like your hair with beautiful flowers. ऐसे तो कीर्तन करते हैं तो लोग उसका अर्थ ही नहीं जानते हैं. So the kirtan is like this, but people don't know the bhava and the real meaning.
Like लोग this विनोदन के shloka, लिए लोग के सुना देते हैं, people are speaking this or singing these songs just to entertain the people. विनोदन करने But के they लिए, know the आनंद meanings देने के लिए तो नृत्य करते that, हैं। actually these songs about Shrimati Radhika's hair. आप भी जैसे इसलिए बड़ा लतेरी बेटी रो लंबी लंबी चो एमन है गंदा पहने तो लाल गेंदा फूल है, सुंदर से जो फूल होते हैं लाल जो गेंदा फूल होता है, So it's a beautiful flower. ठंड के समय ये फूल होते हैं ना, In the winter time, there are small गेंदा फूल flowers. जानते हो, Ganda ऐसे full, छोटे छोटे small. हैं, उसके द्वारा माला तैयार करके So they make और तुम्हारे gardens with this जुड़ा में सजा देंगे। and they put on the hair. I don't know the translation of this name of the flower. लोग तो ऐसे कीर्तन तो करते हैं, So किंतु people कीर्तन- chant this कीर्तन की भावना kirtan. क्या है? But what is the mood of the kirtan behind? तो यहाँ पर करके माला गुंथन आदि I think हमारे हमारे I think here they were already live on Facebook, so I'll switch to the Facebook now. ठंडी के समय ये फूल होते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे जो So there is this गेंदा small फूल जानते हो, ganda ऐसे full. होते हैं, छोटे छोटे ऐसे हैं, उसके द्वारा It's a माला beautiful flower, तैयार करके very और fragrant. तुम्हारे जुड़ा में सजा दो। So I will make this garland with these flowers and I'll put on your head to ornament your bun. Ganda full, I think in English it's called carnations. Carnations, okay? Carnation, the name, no? Of the flower. लोग तो ऐसे कीर्तन तो करते हैं, किंतु So they're कीर्तन की singing भावना क्या है? like this. But what is the mood behind these kirtans? तो यहाँ पर करके माला गुंथन आदि हमारे हमारे इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या करें हैं? So, राधा कृष्ण Narottam Das Thakur is saying, जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर गांथिया लतीर माला দিব দুহার গলে অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে। कितना सुंदर भाव। So beautiful this bhav, Narottam Das एक Thakur. प्राकृतिक लेखक एक लिख So, रहे हैं, imagine और एक अप्राकृत लेखक material poet is writing, but imagine a transcendental poet. Who? नरोत्तम दास Not transcendental poet, Narottam Das Thakur. है। मैंने पहले बड़ा लोग की बेटी लो लंबी लंबी चूल So in the beginning I was singing that another song क्या बोले एमन माला घेते देबो लाल गेंदा फूल about ornamenting the hair of मेरा Shrimati पूरा Radhika. वो याद नहीं है। I didn't remember the ये complete प्राकृत song, लोगों की है, but actually this प्राकृत is कवि की है। written by किंतु अप्राकृत material कवि poets like normal नरोत्तम दास people. ठाकुर क्या बोल रहे हैं? But Narottam Das Thakur, उसी के transcendental लेकर poet, के अप्राकृत भावना दे रहे हैं। he's giving a राधा transcendental कृष्ण प्राण मोर जुगल mood किशोर। to these things. गांथिया मालतीर मेला माला दिव दुहार गले अधरे तुलिया दिव कर्पूर तांबूले। कितने सुंदर भावना So beautiful mood. है। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, साधिका होते हैं, Those who are प्राकृत transcendental, कवि के कविता लेकर के भी उसके ऊपर अप्राकृत भाव को स्थापन करते रहते हैं। so those who are transcendental sadhakas, even if they are in contact with some poetry from mundane poets, maybe even about mundane things, I don't know, Gurudev didn't say, but mundane poets, they take that thing, but they apply their transcendental bhavas to that, even those things जैसे महाप्रभु from material दर्शन, poets, साहित्य like दर्शन, Mahaprabhu. साहित्य दर्पण, You know, he was reciting again and again that shloka from प्राकृत Sahitya नायक Darpan. की भाव लेकर That के actually was the mood of a कीर्तन करने couple, लगे। material जब couple, you know. कुमार इस लोक That shloka, Joko और Marahara. गोस्वामी पाद And then उसी Rupa श्लोक के Goswami, ऊपर
भावों In के this लेकर same के shloka, Rupa प्रियो Goswami, सोवांग सहचरी he wrote this कुरुक्षेत्र में another इस verse. श्लोक को अवतारित कर दिया Priya Soham कितना Swachari Kurukshetra Milita, है। manifesting this bhav. इसलिए जो भावों के जानने वाले होता है, So those who वो know the प्राकृत हो bhav, अपराकृत हो, whether वो it's अपने हृदय में वो prakrita or प्रकाशित करते रहते हैं। इसलिए मालूम those who know these transcendental bhavas, whether they are in contact with something that it is speaking about some mundane emotion or transcendental emotion, because that person is always in the transcendental emotion, he will always apply in the transcendental emotion, not material things. गुंथन यहाँ पर लिखा है, देखो माल्य So हार here गुंथन is telling about ताम्बूल बीड़ी प्रस्तुत करना, like to present दान the betel nuts to Radha Krishna, to also karpur, also camphor to them. There are so many services. परिचारिका एक सेवा में नियुक्त रहती है, सभी सखियां जो है All the समस्त प्रकार sakhis, की सेवा में they are सुनिपुणा है, expert in all the services. all kinds of service. सभी सखियां जो है समस्त All कार्य the में सब sakhis, they are expert in all सुदक्ष kinds है। of services, तासदाई से लेकर के चंडी पाठ तक, हैं? like from A to समस्त Z. कार्य, A to Z. प्रोभाग जूताश्रय से लेकर के चंडी पाठ, तात्पर्य क्या है, माने ये So there's this like the proverb in Hindi, they say like in English I think we say from A to Z, like the person can do everything. In Hindi they say from like making a shoe and also like giving class, like you know the person can from a high scripture, like the person can do anything. A to Z, A to सब Z. कार्य में सब जानते हैं, किंतु तथापि But उनके still, एक विशेष सेवाएं दिया जाती है। each sakhi also they are given a specific service also, like a special service also, even though they know how to do everything. यहाँ पर भी कह रहे हैं, अभी टाइम क्या हो गया? What time? 6:30 बजे। What is the time now? 6:30. हाँ, समाप्त करना है ना। I must end it. श्री अगणित I must end the class. एक एक सेवा में नियुक्त रहती है, एक एक सेवा नहीं, उनके विशेष सेवा रहता है। So all the sakhis they have some also special seva. भक्ति विनोद ठाकुर Like for example, Bhaktivinoda Thakur, he told सेवा क्या है? what is his service? What is his service? कपूर सेवा, Kapur seva, हैं? camphor और service. सेवा तो है ही। There are other service मूल सेवा also, क्या है उसके? but his main service is this kapur offering कोई सेकंड से सेवा camphor. होता है, जलदान, Some तांबूल give अर्पण, offer पाद water, दान अभिषेक। massage ये their नहीं है feet. केवल वही एक ही so सेवा many करेंगे, things. लेकिन सब सेवा करते हुए एक मुख्य सेवा So it's not only that you only do one service. You'll do everything, you know everything, you know how to do everything, but you have one that is your main. रहेगी। One will be your main. It's called Mukhya Seva, like main service. किंतु एक सेवा क्या है उसके? प्राइमरी सर्विस रहेगा। One will be your primary service. Do you understand? प्रधान सेवा रहती है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं, देखो अनंत अगणित परिचारिकाएं हैं, एक एक सेवा में नियुक्त रहती है। श्री राधा गोविंद की साक्षात सेवा जीवों की चित देह अर्थात नित्य सिद्ध देह की प्राप्ति होने पर भी संभव है। So Gurudev is reading the last paragraph of the 10th verse. I just don't have the book here now, I'm sorry, but I remember he was reading this last paragraph. Those who have the book, you can follow up. Last paragraph of the 10th verse, Manashiksha. जब हमारे चित्त देह की अनुभव हो जाएगा, So when you realize your spiritual form, तब then ये समस्त सेवा हम धीरे धीरे slowly you'll be able to attain all these services. बद्ध जीव अपने माइक्स The जड़ conditioned शरीर soul पर सूक्ष्म शरीर से साक्षात सेवा नहीं कर सकता। cannot serve with the material body. इसको ध्यान Spiritual, sorry, not even with gross. जीव जो है, So the conditioned soul cannot serve with the gross body or subtle body, cannot serve. बद्ध जीव में क्या है? देहात्म The conditioned soul, they have the Atma Buddhi, bodily conception. They are full of lust and anger. Their heart is so dirty. द्वारा हमारे शरीर Our body is made with 5 elements: मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, earth, ether, air, fire, and 5 शरीर का।
ये पंचभूत काल water, ऐसे 5 पंचभूत elements, प्राप्त शरीर के द्वारा panchabhut. हम So our body is made राधा जी की सेवा by these करनी 5 elements, and you cannot serve Srimati Radhika with this body. सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परतर निर्मलम हिसिकेनो हिसिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। समस्त प्रकार की जागतिक मटेरियल डेजिग्नेशन उपाधि से हम मुक्त हो जाते हैं। So when we become free from all the material designations, free from lust and anger, then the heart becomes pure. तब धीरे धीरे हमारे अंदर Then में slowly, पोटेंशियल के रूप में this potential, स्वरूप और this रस potency, वो this धीरे-धीरे swarupa, क्या this होगा? rasa, which is like a potency in our hearts, slowly it will manifest. है कि नहीं? ये Isn't ऐसे it? थोड़ी हो जाए। It's not easy like that. There's a आम के गुठली process. तो आप जानते हो। Do you know the seed of आम के गुठली mango? को जमीन पर So when you put the mango seed on the soil, on the ground, then you water it, then slowly it will sprout. द्विदल विशिष्ट होता है ये, आते ना? तो फिर अंकुरित होकर धीरे धीरे एक दिन मैंने पेड़ अंकुरित नहीं हो At जाता। once the tree, the plant doesn't become a tree. There is a उसको process. धीरे धीरे क्या करते हैं? अंकुरित होता है, It will स्प्राउट होता है, sprout slowly. हैं? ठीक उसी प्रकार So in the same way, ये जड़ अभिमान जब चले जाते हैं, मैं स्थूल शरीर हूँ। so when this jara bhiman goes away, like because we're thinking we're the material body, but when this goes away, निज स्थूल like this sloka, this Kirtan explains. Bhaktivinoda Thakur, dekite doesn't mean like seeing, because dek means see, to see. So dekite doesn't mean like, oh, seeing and seeing. Actually the meaning is like performing bhajan slowly, then तात्पर्य क्या है? माने भजन करते करते माने धीरे धीरे slowly performing the bhajan. क्या होगा? What will happen? देखते भूरी बाबा करो है स्थूल परिचय, ये हमारी स्थूल जो परिचय है। So our bodily conception, gross conception, gross bodily conception. I'm a man, I'm a woman, I am a brahmana, I'm the sannyasi, I'm vanaprastha. These are all identifications or identities of the gross body. किंतु पद्रुनिकुलम परमानंद पूर्ण मिताब्दे गोपी भोतुर और कमलोर दास अनिदास। ये एक दिन में थोड़ी हो जाए। But this won't happen in one day. रसगुल्ला थोड़ी है। This is not a rasagula. That you, this is not something like a rasagula that you can just buy in the market and you put it in your mouth and that it like drop and like dropping water, you know, the sugary, the syrup from the rasagula. So it's not like that. You just buy the rasagula in the market and it's like dripping that sugary water and then you just eat it. It's not like that. So easy. भजन करते करते have to do bhajan slowly. अनेक जन्म साधन करते करते After many lives of bhajan, serving Guru Vaishnava slowly. First you listen about it, this is true, but you're not even listening about it. So the more you listen properly, then the more you'll be able to do kirtan also in a pure way. So if you listen in a pure way, then you can do kirtan in a pure way, and then you can also do smaran, remembering, in a pure way. In Raganuga bhajan, smaran and remembrance is the best. Or the most important. How to do this remembrance, smaran? The more you listen in the pure form, like in the proper and pure way, means listen properly the Harikatha. Listen to Harikatha properly. Like the rule to chant, the injunction is there. How we should always, not chant, listen. The injunction is there of how we should listen to Harikatha, and the more we listen, then you will be able. So the more you're listening properly, then the more you'll be able to kirtan or glorify or chant properly, and the more you'll be able to remember properly. कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे सही काले निर्जन. So है ना भक्तों को कीर्तन है. This kirtan explains. शुद्ध श्रवण होने पर शुद्ध रूप में
कीर्तन और Like by the influence of Kirtan, one day you'll be able to do proper Smarana. कहा जाता है क्या है? So another name of Raganuga Bhajan is Smaran Part. स्मरणांग कहा जाता है। Smaran स्मरण Part अंग स्मरणांग means it's the path of remembrance. It's like तो यहाँ everything पर कहा है, about जड़ remembering. शरीर जा अथवा शुद्ध शरीर Raganuga से Bhakti. साथ सेवा नहीं कर We सकता। cannot serve with the material body, आज subtle or कोई कहते हैं gross. कृष्ण मुझे आलिंगन किया Some सपने में people, आया, some शरीर में persons बुदबुद say, निकालता है, "Oh, गंध Krishna निकालता है। came to my dream. He's embracing me. He embraced me in my dream. Krishna has embraced me in my dream." Some people say, "How can you say that? Your body is completely like disgusting, full of bad things coming out of your कृष्ण body. थोड़ी आलिंगन Do you करता है। think Krishna would really embrace you?" नहीं, No. ये तुम्हारे भ्रम मात्र है। This is your confusion, कल्पना your imagination. है। चित्त शरीर जो प्रकट Sorry, your होता है, illusion, your imagination. है। Only when you तब have the कृष्ण chit चित्त शरीर shari, के तुम्हें spiritual body, then yes, Krishna will embrace इसके you बाद नहीं, in your इसके spiritual पहले body. Before that, no. इसलिए करे ये जड़ शरीर या सूक्ष्म शरीर से साक्षात सेवा नहीं So कर with the सकता। material body, both साक्षात gross सेवा में and subtle, we cannot serve संसार directly. में मधुरगत निगूढ़ भावों के कारण And when you serve, नित्य नूतन रस और आनंद की अनुभूति। you'll feel so much bliss because of the mellows, देखो transcendental कितने mellows सुंदर and बात बता रहे हैं। emotions, transcendental bhavas. साक्षात सेवा कब होता है? जब So when you'll be able अपने to serve directly, सिद्ध शरीर के it's so beautiful, it's written here. अनुभव कर लेते हैं, प्रकाश हो जाता है। When our chit sharir manifests, आसान है। then we'll be able to serve directly. बोली बाबा कभी We'll be able to serve directly when our spiritual body manifests. लोभी बाबा कभी राधा कृपा बोली लोभी बाबा कभी निज परिचय। ये राधा जी की कृपा बिना Without the mercy of शुद्ध Srimati शरीर के Radhika, परिचय रिकॉग्नाइजेशन आप नहीं कर सकते। we cannot recognize our spiritual अनुभव body. तब होगा। क्योंकि श्रीमती राधा जी की कृपा बिना Because without the mercy of ये Srimati आपके Radhika, नित्य जो अपरागित your eternal, जो transcendental शरीर के परिचय body, you'll not be able to realize your transcendental body without the mercy of Srimati Radhika. राधा कृपा बोले लभी बाबा कबे निज सेवा परिचय है। ये समस्त भावना बनना होगी। So all these bhav moods are explained in the scriptures, and how to get this ये राधा जी की कृपा mood of कैसे प्राप्त Srimati होगी? Radhika, how to get her mercy. गुरु रूपा मंजरी सखी की So अनुगत। I think I spoke wrong what the Gurudev इसलिए said. कहते now. हैं Come back. राधा कृपा बोले लभी बाबा कबे है। राधा कृपा बोले लभी बाबा कबे निज सेवा परिचय है। ये समस्त भावना बनना होगी। राधा जी की All these moods are explained. कृपा कैसे प्राप्ति हो How to attain the mercy of Srimati Radhika, है। ये राधा जी की कृपा कैसे प्राप्ति होगी? how to attain her mercy. गुरु रूपा मंजरी सखी की अनुगत्य में Under the guidance ऐसे नहीं of Guru Rupa Manjari Sakhi. है। ये भावना को रखना पड़ेगा। So you have to have इसलिए these नरोत्तम दास moods. ठाकुर That's why Narottam Das Thakur is saying, নাথ মরে সঙ্গে লইয়া যাবে শিরূপের পাদ পদ্মে মোরে সমর্পিবে হেন কি হইবে মোর নর্ম সখী গণে অনুগতা নরোত্তমে করিবে শাসনে है। इसलिए कार्य ऐसे मेरा दिन कब होगा when this day will come to me, है। मेरे गुरुदेव that my नरोत्तम Gurudev, दास ठाकुर दैन्य कर मेरे गुरुदेव Narottam Das कौन? Thakur humbly is saying, who लोकनाथ is दास his गोस्वामी Gurudev, मंजूलाल। Lokanath Das Goswami मेरा हाथ Manjulal. पकड़ करके कहाँ ले When he जाएंगे? will catch me, रूपमंजरी take के me पास, by रूप my गोस्वामी hand के पास। and will bring me और to रूप Rupa Manjari, Rupa पास, Goswami, and then और Rupa रूप Manjari, Rupa Goswami, राधा जी की he will, साक्षात she सेवा will प्रदान करेंगे। and give me उसके the पहले direct सब service ट्रेनिंग of हो Srimati Radhika. So first of all, we are तब तो trained. होगा। यही कहते हैं। Then we'll be able to attain. First, there is the there's the training in the beginning. ललिता सुंदरी हमारे लैया कबे श्री राधिका पदे काले मिलाइबे आज्ञा सेवा समर्पिबे आज्ञा सेवा समर्पिबे आज्ञा सेवा समर्पिबे हमारे लैया कबे श्री विशाखा पदे संगीत शिखिब
श्री विशाखा पदे संगीत सीखिब है, कितना सुंदर So beautiful. है ये समस्त भावना। All these moods. इसलिए कह रहे हैं Okay, continuing. साक्षात सेवा की क्षण क्षण में मधुरता निगुण So, भाव के that कारण serving नित्य directly, रस और आनंद की you'll be able अनुभूति to होती है। feel so उस much समय bliss because सेवा of this के अतिरिक्त new leaders and new ससुख moods की and लालसा गंध मात्र many भी moods. नहीं होता। And you won't have any even अपने सुख नहीं रहेगा, sense for desire of your own happiness. गोविंद के सुख Everything will be only for the service of Govinda, only for the happiness of your इसलिए Sevya इस Vasudo, स्थिति में your कभी worshipful भी किसी deity. प्रकार दुख हृदय को स्पर्श नहीं In कर that सकता। moment, not even no any kinds of मधुर रस sadness से or युक्त unhappiness will touch the वियोग heart. भाव के जो दुख जैसा व्यापार दिखलाती पड़ती रहती है, वह भी परम आनंद की रूपांतर मात्र है। यहाँ जड़ीगत दुख की तनिक भी संभावना नहीं है। Actually, even the separation, which like maybe you think like it's unhappiness, is actually another form of the happiness, of the ananda, of the bliss. The separation, there's nothing of these kinds of material unhappiness and sufferings. These don't exist there at all. This don't even touch the heart. This material unhappiness and suffering does not even touch your heart after you attend this direct service. क्योंकि वो साधक उस समय सिद्ध देह की स्वरूप की अनुभव कर लेते So the sadhaka realizes spiritual form, Swarupa Deha, सूक्ष्म शरीर के ऊपर चले जाते हैं। and he goes इस जड़त के कोई beyond. उसके सता नहीं सकते हैं। Beyond, the sadhaka goes beyond the subtle and gross body, and nothing from this world can also trouble him क्योंकि वो सदा सर्वदा or stress him, because नित्य he's always नित्य in the Nitya Dham, सेवा में transcendental निरत रहते हैं। abode and ये कहते हैं eternal abode, absorbed in इसलिए this ब्रजवासी service. क्या कहते So the Vrajavas, they sing, what do they sing? जय राधे जय कृष्ण So Gurudev will sing now. I think I'll जय just वृंदावन रसिकम I'll just jump to the end because Gurudev will speak something more. But you can listen to his kirtan at the Hindi live. जय वृंदावन रसिकम भई जय हरे कृष्ण राधे 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 जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय बोलो राधा रानी की जय जय श्री राम गुरु प्रेमानंदी हरि हरि। हाँ हाँ, ये मनो शिक्षा को आप लोग So you should read and study the Mana Shiksha. शाम को बताऊंगा In the evening time, I'll tell about what is the Panchamrita, पंचामृत के बारे में 11th shloka of Mana Shiksha. बताएंगे। We'll ठाकुर जी speak अभिषेक about करना है ना, the Panchamrita. We also need to do Abhishek of the deity, no? So how is this Abhishek with the Panchamrita? हाँ समझे, ये समझते चलो। 5 nectars. पंचामृत Because the 11th shloka is talking about this. हैं, ये पंचामृत के ध्यान करो, नित्य ध्यान To करो, meditate every day in this Panchamrita. सेवा करके 5 nectars. Serve, after serving, meditate. चलो हो गया। Okay. बाबा